जय भीम भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका। कैसे हो रवि भैया जी? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो रवि भैया जी? कैसे हो रवि भैया? चले गए क्या आप? बोलो। खाना पीना हुआ आपका? लेके आ जाओ बेटा, दे दो। हाँ ठीक है बेटा। दोनों इसको उठा लो बेटा इसको। आराम से, दौड़ क्यों रही हो?
हम्म, किचन में बेटा बोलो। हाँ? तो टॉफी कल लेके जाओगे ना, आज तो नहीं ना। हाँ? अभी पापा उठेंगे ला देंगे बेटा, परेशान नहीं करते। पापा पता नहीं कब उठेंगे। बर्थडे 27 को है, मना आदेश रही हूँ। शांत रहो, चिल्लाते नहीं है बेटा। इसको फ्रिज में रख के आ जाओ। इसको एक टमाटर लेके आओ, हरी मिर्च लेके आओ, जाओ। कल क्या बनाओगे? जब बनाएंगे तब बनाएंगे, अभी आज का देखो, कल का कल है। श्रेया इधर आ, एक बोतल पहले ले जाओ, वहाँ टीवी के पास रखो, आराम से गिर जाएगा, एक एक कर ले जाओ।
जय भीम सोनू भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? खाना पीना हुआ आपका? नहीं भैया, अभी तो बना रही हूँ मैं। आज सुबह से बहुत परेशान हूँ। खाना अभी बना रहे हैं। आज बच्चे भी नहीं खाए हैं, वैसे ही हैं। आपका हुआ खाना सोनू भैया?
खाना पीना हुआ आपका? हाँ क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान नीला सलाम दीदी। आपको भी भारती भाई, आप कैसे हो दीदी? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताओ आप कैसे हो? आपका खाना पीना हो गया दीदी? नहीं भाई, खाना पीना अभी बना रही हूँ। आज बच्चे भी हमारे अभी कुछ नहीं खाए हैं, खाना अभी बना रही हूँ। आप बताओ आपका हुआ? घर पहुंच गए कि अभी नहीं? आपका हुआ भाई? मैं भी ठीक हूँ दीदी। ओके भाई, ठीक ही चाहिए। खाना वाना हुआ आपका? घर गए कि नहीं भारती भाई अभी?
मैं अभी तुरंत खाना खाया हूँ दीदी। अच्छा, घर पहुँच गए? आप बताइए दीदी कि मैं कहाँ हो सकता हूँ। मुझे तो लग रहा अभी नहीं पहुँचे हो भाई। 1 मिनट देता हूँ। अच्छा पापा का तो होगा, चलो ये ले लो। अच्छा दीदी पढ़ रही है। एक पेज लेके आना बेटा, पेपर लेके आओ। ओके। मैं आधा घंटा पहले ही घर पहुंचा हूँ दीदी। ओके भाई, पहुंच गए, अच्छी बात है। और बताओ मम्मी पापा घर में सब लोग कैसे हैं? घर में सब लोग कैसे हैं भाई? कहाँ गया था? जब वो नहीं तो डब्बा नहीं लेने गया? अरे ये जैली किसने कहा तुमको लाने की? भाई फादर सीरी 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 धर्मेंद्र कुमार। इनके कहने का मैंने इनको पहले कहा था गरीब वाली ले तो इनसे सस्ती। अब ये ना आपके कहीं की जैली ले आए हैं। अब तुम भी लोग चिल्ला रहे हो जैली के लिए। जैली अलाउ नहीं होती इसको। हाँ कभी किसी को बांट या तो चॉकलेट या तो वो मेलोडी। ये तो डिसाइड कर रहे हैं कल से। अरे मैं भी कर रहा हूँ। इनकी इनकी ख्वाहिशें महारानी जी की छोटू भी गरीब वाली मांग रही थी। नहीं होती है, नहीं होती वो, नहीं होती। इसी की ख्वाहिश थी, इसी कितने का आता था? ये 215 का, गरीब वाली 130 की थी। और मेरा रिचार्ज भी हो गया दीदी। अच्छा भाई, सभी लोग ठीक हैं दीदी। ठीक ही रहना चाहिए भाई। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला शिला। आपको भी भाई। भांजी कैसी हो? भांजी अभी तैयारी कर रही है भाई, उसका परसों बर्थडे है तो परसों पेपर है। सॉरी, कल कल बर्थडे उसका, कल पेपर है तो केक वगैरह नहीं ले जा सकती है क्योंकि पेपर में अलाउ नहीं होते हैं। तो वो टॉफ़ी वॉफ़ी ले जा रही है बांटने के लिए, तो उसी के पीछे पड़ी है कि मुझे कौन सा चाहिए कौन सा नहीं, अभी डिसाइड कर रही है। क्या कर रही हो भांजी? भांजी अभी भैया अपने तैयारी में है। थैंक यू भारती भाई, खाना पीना खा लिए। थैंक यू सो मच।
ये आकाश मेलोडी थी नहीं, मेलोडी बंद हो गई नहीं था। अरे सॉरी यार नहीं तो रखी थी। अरे 50 आपको ना है बाहर से इसे चाकू से खोला। खोल दो फिर से। थैंक यू सो मच भाई, भारती भाई। खाना पीना खा लिए, रेस्ट कर लो, सफर करके गए हो ना।
क्या कर रही हैं दीदी? रोटी बना रही हूँ भाई, भारती भाई भी रोटी बना रहे हैं। आज सुबह से बहुत परेशान थे। आप बताओ भारती भाई। पगली आज लाइव चलाई थी दीदी। सॉरी भाई, मैं किसी के लाइव में नहीं गई थी। मैं आज बहुत परेशान थी सुबह से, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे घर में ही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं अभी खाना बना रही हूँ। मैं तो आज बहुत ज़्यादा बिजी थी दादी। कोई बात नहीं दीदी। मैं कल क्या, मैं 2-3 दिन से नहीं गई। बुखार इतना तेज हो जा रहा है ना रह रह के, जुकाम की वजह से। जब सो जाती हूँ ना तो फिर सो ही जाती हूँ। सो नहीं, 109 102। 109 पापा मुझे वो दवाई वाली बोतल इंस्टाग्राम आकाश भांजा बनाया क्या दीदी? हाँ भाई। ट्यूशन जाना है? मैं हाँ, ट्यूशन वो मेरे ही फोन में बना है, उसका नहीं है। वो बनाया, वो कहाँ चलाता है ये? ट्यूशन जाना है? मैंने ही बनवाया है अपने फोन में। ट्यूशन? हाँ, ट्यूशन जाना है, बताई थी मैम ना। जाओ। अभी नहीं, 4:30 जाना है ना। खाना खा लो पहले। नहीं नहीं, खाना खा लो बेटा, सुबह से कुछ खाई नहीं हो, खा लो। मैंने ही बनवाया अपने फोन में भाई। कितने ऊपर तुम रख दिए थे का? पापा आराम से।
आप ही मैसेज किया था क्या दीदी? हाँ भाई, मैसेज तो मैंने ही किया था। मुझे भी इंस्टाग्राम के बारे में कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, कैसे होगा। मैं इसलिए ज़्यादा उसको कुछ नहीं किया। मैंने देखा आपकी आईडी थी, मैंने सोनू भैया पे किया था ना फॉलो, तो उनके साथ आपको देखा था, तो फिर मैंने आपको भी किया, फिर मैसेज भी किया था, और वो उनको किया था अनमोल भैया को। तो जैसे बैग और टूल्स लेके आओ। भाई ये फूस जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर, हाँ आपके इंस्टाग्राम पर मैसेज मैंने ही किया था, मैंने ही किया था भाई। अच्छा, अनमोल भैया का नाम संदीप है क्या? उस पे आईडी तो संदीप नाम से बनी है उनके, आईडी तो संदीप नाम से बनी है। अनमोल भैया नहीं, दानी भैया। सही कह रहे हो, दानी भैया कहती हूँ तो चिढ़ जाते हैं। दानी भैया नहीं, मच्छरदानी भैया। मच्छरदानी तो पूजा सिस्टर बोलती हैं। अभी नहीं, पहले खा ले रोटी सब्जी। प्रमोद, जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, कैसे हो? बाय बाय भैया, बाय बाय। उठा लियो। मस्त हैं। अच्छा भैया, मस्त ही रहना चाहिए। मैं चूड़ा खा रहा हूँ दीदी। अच्छा
यदि खाना है तो आ जाइए दीदी। कहाँ नसीब है भारती भाई, बताओ। मम्मी ये मेरी टॉफी। हाँ हाँ तुम्हारी टॉफी। ये मेरी टॉफी। एक भी मत लेना, मैं गिन के जा रहा हूँ। हाँ इसमें गिन के पूरी जाओ। 108 है। कोई नहीं लेगा। मम्मी तो वैसे भी वो तुम तो खाते नहीं है, तुमको पता है। हाँ तो खाना भी मैं बोल भी नहीं ना खाने के लिए आपको। 109 है ना, और तूने 108 और भारती मामा सब सुन रहे हैं। ये भाजी मामा को क्यों दो? मेरे बर्थडे विश किया आपने? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? चीहू कैसी हैं? भाभी जी कैसी हैं? मैं लूंगा मम्मी नहीं। भारती मामा कितने अजीब इंसान है। अजीब इंसान है? गंदे मामा। क्यों? टॉफी मांग ली है इसलिए? अच्छा, क्यों? वो टॉफी नहीं खा सकते हैं? नहीं चत्तू है। अच्छा, मैं नहीं खाना। क्या कर रही हो भांजी? कब बर्थडे है भांजी? 27 तारीख। मेरा कल है। कल है? हाँ कल तो 26 है। हाँ 27 को है। 27 तारीख को भाई। उस दिन बढ़िया है सभी। मैं स्कर्ट पहनूंगा। हम्म? स्कर्ट पहनेगी बोल रही है। कपड़े तो लेने गई नहीं। कपड़े कल ले लूंगी। बोलो कितना टॉफी चाहिए मुझे, बोलो। टॉफी नहीं कह रही है, मुझे विश नहीं किया है, बहुत गंदे मामा है। मैं विश करूंगा जन्मदिन दिवस पर। हैप्पी बर्थडे एडवांस में। थैंक यू सो मच भैया, प्रमोद बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू। आपसे तो लड़ती रहती हैं। थैंक यू बड़े भैया। जय भीम जय भीम जय भीम भैया, जय भीम। ड्यूटी है क्या भैया? प्रमोद भैया ड्यूटी है आप? टोटल 30 हो गए। एक बार रुक जाओ, मैं पहले कॉल करके पूछती हूँ मैम से जाना है कि नहीं। जब मैं लेके आया तो मैम क्या बोली थी, आना है? हाँ मैंने सुना ही नहीं था। और ये बैर सिर्फ दिखाया होता है, बल्कि ये बैर नहीं, असल में प्यार होता है मामा और भांजा भांजी के बीच। बिल्कुल भैया बिल्कुल। क्या कर रही वो भांजी? बैग वैग लेके रेडी है ट्यूशन के लिए।
पूछो ना जल्दी। पूछ रही बेटा, रुक जाओ, हाथ धुल लो, आटा लगा है, पूछ रही हूँ। मेरे भी हो जाता है। कल हिंदी का पेपर है। मैं डबल काम दे देती है। ये वो कौन लिख रहा है? आकाश, आकाश। आकाश, तुम्हारा मैसेज आ गया ट्यूशन का। आकाश, आकाश, हट जा। मम्मी हमारा कमेंट इनका पेपर हो जाना। पूछो मैम से। पूछ रही हूँ बेटा, 1 मिनट रुक। जय भीम भाई, जय भीम। हाँ, काम चालू है, राजमा निकाल रहे हैं। अच्छा, राजमा निकाल रहे हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। हमारी तरफ से आपको भी भाई। भारती भाई, खाना खा लो, आ जाओ। मैम के पास मैसेज कर देना। कर दिया? ये छोटू से दीदी, मैं जा सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थका। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जा सकते हो। मैं तो तभी आपको बोला कि आप रेस्ट कर लो। मैं रात वाली लाइव में पगली के साथ मिलेंगे। यही तो लगा। ओके भाई, ओके, थैंक्स। रात में सिस्टर की लाइव चलेगी भाई? ये सबसे अच्छा है, देखो तुझे फ्लावर पसंद है ना। लाइव में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। रमेश भैया, कहाँ है? कैसी हो सिस्टर? ठीक हूँ भैया, तबीयत उतनी अच्छी नहीं है पर ब्लू एंड ठीक हूँ। पिंक एंड ऑरेंज फ्लावर। यदि आपका इजाज़त हो तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? दीदी, बिल्कुल जा सकते हो। भारती भाई, बिल्कुल जा सकते हो। रेस्ट करो, आप थके हो ना, सो लो थोड़ा सा, माइंड थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, क्योंकि सफ़र में ना ऐसा होता है, शरीर अपने आप घूमती है। घर परिवार में सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं भैया, सब अच्छे हैं। आप बताओ, आप कैसे हो? आपके घर परिवार में सब कैसे हैं? हम भी सब अच्छे हैं सिस्टर। ओके भैया, आपका लाइव चलेगा ना? दीदी, देखेंगे। भारती भाई, कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि मैं बताऊंगी, मैसेज द्वारा बताऊंगी। आपके कुछ घर में ऐसे मैटर थे जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लाइव में नहीं बता सकती, पर आपको पर्सनल बता दूंगी। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू। मैं आपके लाइव में पगली के साथ मिलने को बोल रहा हूँ दीदी। ओके भाई, भारती भाई, थैंक्स। तब तक रेस्ट कर लो। थैंक यू रमेश भैया जी, थैंक यू। अपना ख्याल रखना दीदी। ओके भाई, आप भी अपना ख्याल रखना भारती भाई। अमिताभ बच्चन है सिस्टर। बाय बाय भारती भाई, बाय बाय भारती भाई, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दीदी, ओके भाई, बाय 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 बाय। आप भी अपना ख्याल रखना।
क्या? जय भीम, जय भीम भाभी, जय भीम, कैसी हैं आप? मैम ने भी फोन जाओ ट्यूशन छोड़ दो, मैम ने कॉल किया था, बात हो गई। मैं नहीं। लाइट डन, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। और कैसी हो आप? बढ़िया भी हैं, नहीं भी भाभी, क्या बताएं, तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आप बताओ, आप कैसी हो? हम भी सुबह से सोए हुए थे, 2 बजे उठे हैं, खाना बनाए, अभी खा रहे हैं। वीडियो बहुत सुंदर बना रही हूँ सिस्टर जी, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, खाना खा लो, खाना खा रही हूँ। क्या हो गया तबीयत, क्या बुखार आ रहा है क्या, और कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम भाभी ना, मैं वहाँ से आई ना, गई थी हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए, आज 5-6 दिन हो गया। मैं सुबह बिना कुछ खाए पिए चली गई थी। मैं सुबह गई थी, आई 8 बजे, बिना कुछ खाए पिए, वहाँ का पानी उनी पी लिया, ऐसे पता ना जुकाम इतना तकड़ा हो गया। तब से ना मेरे तो जुकाम होता, मेरी नाक नहीं चलती है, सिर भारी भारी सब बुखार आ जा रहा है। आज तो हम लोग 12 खाना बनाए थे, खा लिया, उसके बाद सब पूरा घर सो रहा हमारा। भाप लो, हाँ भाभी भाप ले रही हूँ, मशीन है घर पे, भाप ले रही हूँ। ये भी तो बाद में नुकसान करती है भाप भी, बलगम सुखा देती है, सीने से दिक्कत होती है। आज हम सोए थे, 2 बजे तो उठे हैं सो के। नहीं नहीं भाभी, हम लॉन्ग वीडियो, इस पे तो लॉन्ग वीडियो हमारी नहीं उतनी चलती है, दूसरा चैनल था उस पर लॉन्ग वीडियो हमारी बहुत अच्छी चलती थी, और चैनल भी बहुत अच्छा चलता था, उस पर हम शॉर्ट नहीं बनाते थे, लॉन्ग ही बनाते थे, बहुत अच्छी चलती थी। बट हमारी मम्मी का बीच में डेथ हो गया था, उसके बाद हमने उस पर वीडियो डालना छोड़ दिया, हमारा चैनल भी मोनेटाइज, $95 कंप्लीट भी हो गए थे। फिर उसके बाद हमने उसको काफ़ी दिन तक नहीं बनाया, उसका पता नहीं क्यों आज टाइम घटा दिया, तब से उस पर वीडियो ही नहीं डालते, खुद गा के बनाते हैं। मैं तो अभी उठी हूँ 4:15 पे। अच्छा। नहीं, हम सुबह उठे थे, चाय वो बनाए थे, बच्चों के लिए नाश्ता बनाए थे,
आज ये स्कूल का ऑफ था, पेपर चल रहा है ना, तो एक दिन ऑफ एक दिन ऑफ ऐसे हो रहा है। तो आज ऑफ था तीनों का, तो सब 9:30-10 बजे ट्यूशन चले गए थे, आए हैं 12:30-1 बजे। मैं सोई थी तब, फिर गए ट्यूशन। इसमें भी तो अच्छा जा रहा आपका। उतना अच्छा नहीं जा रहा जितना अच्छा उसमें जाता था। उस वाले चैनल में हमारा बहुत अच्छा व्यू जाता था, लॉन्ग से 50, 60, 75 घंटे हमारे कंप्लीट हो जाते थे एक वीडियो से। कई कई वीडियो हमारे 500 आज टाइम चल गए हैं। हाँ, कल मैं एक वीडियो देखा था, उसमें भी 14,000 व्यूज था आपको। हाँ, शॉर्ट्स में ना। आकाश, तुमको भी जाना बेटा ट्यूशन, तुमको भी जाना इतनी टाइम। ठीक है। बेलापरवाही का काम करो बैठकर। मम्मी, बोलो बेटा। आपके फोन आज सरला दीदी की लाइव चली थी कि नहीं चली थी, मुझे यह भी नहीं पता। ऐसा ना भाभी, मैं रात में भी नहीं गई थी दीदी की लाइव में, और मैं आज भी नहीं जा पाई। आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मैं उसी में उलझी पड़ी हूँ। जब से उठी खाना बनाई, फिर मैं नहीं जा पाई। नहीं पता है, शाम को जाऊंगी। शॉर्ट में तो आपका और भी ज़्यादा है। हमें भी बता दो सिस्टर कैसे बनाती हो, मैं भी बनाया करूँगी शॉर्ट वीडियो भाभी। कौन सी वीडियो बताओ, कैसे क्या बनाना है। लॉन्ग किया शॉर्ट? थैंक यू सो मच। आप कब लाइव चलाएंगे बताओ, मैं आ जाऊंगी आपकी लाइव में टाइम निकाल के, चाहे जैसे। बापू काम कर लो बेटा। अरे भेजोगे? अच्छा, भेज रही हूँ। शाम को 9 से 11 तक चलती हूँ सिस्टर। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप बताइएगा सिस्टर। कोई बात नहीं है भाभी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम आ जाएंगे। कल परसों से तो थोड़ा सा आराम ही है। कल परसों ज्यादा परेशान थे। कल परसों का 4-5 दिन से परेशान है।
ऐसी बात नहीं है भाभी, स्वास्थ्य से ही थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। एक पता नहीं कौन आया था लाइव में, हमारे सोनू भैया के नाम से सारे लोगों को हाइड करके चला गया दीदी। सोनू भैया के नाम से सोनू भैया थे क्या? सोनू क्वेरी लिखा था, सोनू जाटो। ऐसा ना भाभी, जो ऑटो क्लिकर लगाते हैं ना, कभी कभी ऑटो क्लिकर भाग जाता है, तो वो ना कमेंट पे ऐसे जाता तो अपने आप हाइड हो जाता है या तो टाइम आउट हो जाता है। आप अनहाइड कर देना क्रोम ब्राउजर से जाके, अगर किसी को हाइड हो गया होगा तो। नहीं तो फिर वो आपसे जुड़ भी नहीं पाएंगे, जो जो लोग हाइड हुए होंगे। क्रोम ब्राउजर से जाके अनहाइड कर देना। अश्विनी नाम से थी उसकी आईडी। अच्छा, तब सोनू भैया नहीं थे। सोनू भैया तो सोनू से नाम, सोनू जाटो से है। सोनू भैया की आईडी अश्विनी नाम से है क्या? नहीं नहीं, अश्विनी नाम से नहीं है, उनकी कोई आईडी नहीं है। उनकी आईडी सोनू जाटो, सोनू कोयरी, दो आईडी है उनकी। अश्विनी नाम से उनकी आईडी नहीं है। वो पीली है फिर। आप ऐड वाली लाइव नहीं चलाते? ऐसा ना भाभी, मैं अभी किसी के लाइव में, तबीयत ठीक नहीं थी ना, नहीं जा पा रही हूँ, और मैं अब ऐसे होता तो ऐसे करके रख देती हूँ, या पिक्चर लगा देती हूँ इस पे, बैकग्राउंड तो चला लेती हूँ। उस लाइव में ये होता है ना, हमें बैठना पड़ता है सामने, सामने नहीं बैठो तो फिर सही नहीं होता है। चलाऊंगी कल परसों से, थोड़ा सा और आराम हो जाए, जुकाम से ना नाक को जाम हो रखी, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। चलाऊंगी, ऐड वाली चलाऊंगी, फिर मैं भी जाऊंगी कंटिन्यू सबके लाइव में, तो फिर तभी तो। अब मैं नहीं जाऊंगी, मेरे में कौन आएगा, आपको पता है। मैं वापस मंगाई। बोलो नहीं बेटा, 5 मिनट नहीं।
इस डॉलर बनता है क्या? डॉलर देखो भाभी, वो तो अपने व्यूज के हिसाब से और जाता है, वॉच टाइम के हिसाब से। डॉलर डॉलर तभी बनता है जब अच्छे खासे हमारे चैनल चलने, तभी बन पाता है, नहीं तो पॉइंट ही बनता है। डॉलर इससे भी बनता है और उससे भी बनता है, वो तो अपने ऊपर है, हमारा कैसा लाइव चलता है, कैसा हमारा बीट जाता है, वो तो हमारे चैनल के ऊपर है। लॉन्ग वीडियो से ज्यादा डॉलर बनता है या लाइव से ज्यादा बनता है दीदी? दोनों से बनता है। अगर लॉन्ग वीडियो नहीं चली तो उससे भी नहीं बन सकता है। लॉन्ग वीडियो चले अगर अच्छी है तो 8 मिनट से ज्यादा की वीडियो बनाओ तो उस पर ऐड लगा के अच्छा व्यू, अच्छा डॉलर तो वीडियो से ही जाता है। लाइव में उतने लोग नहीं देख पाते हमारे, लेकिन जो हमारी वीडियो होती है कहाँ कहाँ तक के लोग, कितने लोग देखते हैं, उस हिसाब से अगर ऐड लगा के चले तो हमारे उसी से सही बनता है, वीडियो से। काम हो गया? अरे ओपन नहीं हो रहा? पीडीएफ मुझसे नहीं खुला। पीडीएफ उसमें ऐड है, लॉगिंग है, सब दिखाओ। ये खुल ही नहीं रहा है, मेरे में भी नहीं खुल रहा था। एक बार मैम से मैसेज भेजो, मैम ये कौन सा भेजा नहीं, फोन में ओपन नहीं हो रहा। आया फैजान से। अगर लॉन्ग वीडियो 1000 लोग देख लेते हैं तो कितना पॉइंट बन जाता है? भाभी देखो, 1000 लोग देखने से ये नहीं, पॉइंट नहीं, ये होता है कि 1000 लोग हमारा वीडियो कितना वॉच किए हैं, 1 मिनट की, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, वॉच के हिसाब से होता है ना हमारा। अब व्यूज तो हमारा कोई क्लिक करके ऐसे छोड़ देगा तो भी दिखाएगा कि कितने लोग देखे हैं। सबसे मेन बात होती है ना कि कितने लोग कितने मिनट फुल वीडियो देखे हैं, कि 10 सेकेंड देखे हैं, कि 10 मिनट देखे हैं, उसके हिसाब से बनता है। लाइफ में तो मेरा 5-10 पॉइंट ही बन पाता है हाईएस्ट में। लाइव में भाभी कहाँ हमारे कोई जोड़ी पाता, उतना 10-15 लोग होते हैं, 2 घंटे हम चलाते हैं तो इतने से कितना हो जाएगा, उतना ही होता ही है सबके में, आप में भी मेरे में भी उतना ही होता है। मेरे में भी उतना ही होता है भाभी, मेरे में ज्यादा नहीं हो पाता क्योंकि मैं भी मेहनत से काम नहीं कर पा रही हूँ। जब से मोनेटाइज हुआ चैनल तब से कहाँ काम कर पा रही हूँ, लेकिन करूंगी, थोड़ा सा सही हो जाऊं तो। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अभी तो लग रहा है मुझे छोड़ दो यूट्यूब, कुछ नहीं है यूट्यूब में। बात तो सही है भाभी, आपकी बात बिल्कुल राइट है, वो मैं समझती हूँ। यूट्यूब जो लोग बोलते हैं इतना आसान नहीं है। अच्छी वीडियो बनाने वाले, अच्छा काम करने वाले वायरल नहीं होते हैं। अभी कोई उल्टा काम करता है तो देखो, उनको लोग सपोर्ट करते हैं, वैसे लोग कमाते हैं पैसे। ईमानदारी, अच्छी भावना, अच्छी सोच रखने वाले इंसान वो नहीं आगे बढ़ पाते हैं। एक देखना कल्पना नाम से, वह पूरे दिन मेहनत करती हैं फिर भी तो उनको ऐसे ही बनता पॉइंट। वो तो है ही है भाभी, नहीं बन पाएगा, मैं जानती हूँ। 5-6 महीने से नींद हराम है मेरी सिस्टर। मैं उस चीज को समझती हूँ भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं भी वही काम करती हूँ, मुझे पता है।
बट मैं ये वाला चैनल पे मैं इतनी मेहनत करती हूँ, जो मेरा पहले वाला चैनल था मैं उस पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं, बस आधा घंटे लगते थे मुझे वीडियो बना के एडिट करके और अपलोड कर देती थी। वो चैनल मेरा बल्कि अच्छा चलता था। अभी भी उसको चालू कर सकती हूँ मैं। 6200 कुछ सब्सक्राइबर उस पे है मेरे, जो कि मेरा वो 3 महीने में मोनेटाइज हो गया था। ₹10,000 जो खर्च कर दिया वो अलग से। क्यों इतना पैसे क्यों खर्च कर दिया, किस चीज में? इतना पैसे क्यों खर्च कर दिया, किस चीज में भाभी? फोन लेने में? हाँ, क्यों इतना पैसा खर्च किया? मुझे तो एडिट करना नहीं आता सिस्टर, अपना नंबर देना, कैसे करते मुझे भी बताना। नंबर नहीं देंगे हम आपको। इंस्टाग्राम चलाती है ना, आपको हम वहां से फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम से संपर्क करना, हम वहां से बात कर लेंगे आपसे। इंस्टाग्राम से हम आपसे बात कर लेंगे। हाँ, आप उसको दोबारा चालू कर सकते हो सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर सकती हूँ भाभी, लेकिन ना मेरा मन नहीं होता है। मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए, मैं जॉब करूंगी, ये सब नहीं करूंगी। बस बच्चों के लिए थोड़े से छोटे हैं ना, मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। नहीं तो मैं ये सब, इससे अच्छा है कि जॉब कहीं करूँ, अच्छा है। घर में कोई देखने वाला नहीं है ना, बच्चे छोटे हैं, मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा सा सही नहीं रहता है इसलिए। वाईफाई लगाया, स्टैंड लिया, बनाया 2-3। अच्छा, वाईफाई लगवा लिया, स्टैंड लिया। हम तो कुछ भी नहीं लिए हैं। हम तो वो भी वीडियो बनाते थे, वैसे ही बनाते थे बिना स्टैंड का, ऐसे ही रख के काम चला लेते थे। ये भी ऐसे बना लेते हैं हम। बाकी वाईफाई भी नहीं लगवाए हैं, 5G रिचार्ज कराते हैं, उसी से चलाते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम आईडी देना। ठीक है, हम आपको इंस्टाग्राम आईडी हम आपकी फॉलो कर लेंगे, क्योंकि सरला दीदी को फॉलो किया है, वहां से आपको भी कर लेंगे हम, और कमेंट छोड़ देंगे, आप भी कर लेना। हम अपना नाम डाल देंगे जब कमेंट करेंगे तो। मिला क्या एक पैसा भी? एक पैसा क्या, अभी बहुत टाइम लगेगा भाभी। पैसे आपका गूगल पिन आया कि नहीं अभी? जब तक आपके $100 नहीं कंप्लीट होंगे तब तक आपको एक पैसा नहीं मिलेगा अभी। ओके सिस्टर, गूगल पिन आया? एडिसेंस पिन जो आपने अप्लाई किया था? बच्चे आपके किस क्लास में पढ़ते हैं सिस्टर? मेरा लड़का 8वीं क्लास में है, लड़कियां मेरी 3rd क्लास में है, अब 4th में जाएंगी। आज सरला दीदी ने लाइव नहीं चलाई अपनी। अच्छा,
आपके बच्चे हमारे बराबर हैं, फिर हमारा बेटा भी 8 क्लास में पढ़ता है, इस बार 9th में जाएगा। हाँ भाभी, बच्चे तो सेम बड़े हो गए हैं। हमारा बेटा भी हमारे बराबर ही हो गया, बेटी मेरी 2 क्लास में जाएगी। अच्छा, दूसरी में? हमारी चौथी वाली क्लास में जाएंगी दोनों, हमारी जुड़वा बेटी हैं। आपकी चौथी क्लास में जाएंगी, 3rd क्लास में है। हाँ, जुड़वा है तभी एक साथ जाएंगी। हाँ भाभी तभी एक साथ जाएंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। काम हो गया? अरे साला भेजिए ग्रुप पे इतने मैसेज। नहीं, ओपन नहीं हो रहा। एक मिनट, मैं अपने में देखती हूँ। सोनू भाई आपके भैया हैं क्या? सिस्टर एक फोटो में आपके साथ हुआ भी थे। हाँ भाभी, हमारे भाई ही हैं। सोनू भैया हमारे घर आए थे, भाई से बढ़ के हैं। अच्छा, थैंक यू भाभी, थैंक यू। अपनापन होना चाहिए भाभी, ये कोई नहीं होता है कि हमारा खून का जो हो ये हमारा सगा संबंधी है। एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, वही अपने हो जाते हैं। यूट्यूब पे कुछ मिले ना मिले रिश्ते बहुत प्यार प्यार मिले हैं सिस्टर जी। बिल्कुल बिल्कुल भाभी, बिल्कुल, ये तो बात सही है, रिश्ते अच्छे होने चाहिए। इससे बढ़ कोई चीज नहीं होती है। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं ना कि जिस जगह हमारी फैमिली जिनको हम समझते हैं अपना, वो नहीं खड़े होते हैं, जो हमारे माने बनाए गए रिश्ते जो हमारे साथ उतने खड़े होते हैं।
कर लो बेटा, टाइम भी हो गया। फिर मैं उनको जाके ले आऊंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। वो वाला चार्जर देना बेटा, आकाश चार्जर दे। इसमें भी लगता है वॉच टाइम के हिसाब से डॉलर बनता। बिल्कुल भाभी, फिर आपका डॉलर तो उसी हिसाब से बनेगा ना, जितना हमारा वॉच होगा उतनी हिसाब से बनता है। बीज और वॉच के हिसाब से ही बनता है, ऐसा नहीं है कि इसमें वॉच नहीं, वॉच इसमें भी बिना वॉच के नहीं, ऐसा होता है। जितना ज्यादा वॉच टाइम मिलेगा उतनी ही ज्यादा डॉलर बनेगा। हाँ बेटा, चार्जर देना, तुम्हारे बगल में है आकाश, देना। आज कुछ गर्मी लग रही है ना। मोनो होने के बाद तो लोग जुड़ना ही बंद कर देते हैं। मोनो होने के बाद चैनल कुछ डाउन हो जाता है। बैकग्राउंड में फोटो बहुत सुंदर लगाई हो सिस्टम। ओके भाभी, थैंक यू भाभी। ओके भाभी, ओके, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय भाभी। बाय बाय, काम कर लो, शाम हो गई है।
जय भीम, नमो बुद्धाय। सप्ता दीदी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ, आप कैसी हो? स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोलिए। बोल रही हूँ दीदी, आप कैसी हो बताओ। of camels in different environments. आपका नाश्ता हो गया शाम वाला? शाम को खाना ही खाई हूँ दीदी। ठीक है सिस्टर जी, बाय बाय। बाय बाय दीदी, बाय बाय। सप्ता दीदी।